Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Surajji. Good morning, Sudhir. Good morning, Varun. Good morning, Shreyas. Good morning, Nitesh. Good morning. क्या जबरदस्त मुंह आया. Fun it was. Good morning, Shrikant. जो भी डाउट से पूछ लो. We'll start the streaming in 2 minutes. नहीं, नहीं, नहीं. Not at all. नहीं, BTC का रिवैम्प रिएक्शन पे एग्जीक्यूशन देखेंगे. रुकना, फिर से और एक ऐड ऑन करेंगे. मजा आएगा. इतना जल्दी क्यों? भाई मेरा मिस हो गया लो. लिमिट ऑर्डर यहाँ पे रखा था. इंटैक्ट पे हुआ ही नहीं. नहीं, उसके बाद बीच में एंट्री लिया यार. सुबह में ये वाला इंटैक्ट के साथ लॉन्ग किया था. आईडी के लिए होल्डिंग थी. स्विंग कन्वर्जन के लिए ट्रेड ही नहीं मिला हुआ है. अगर ये इंटैक्ट होता तो ये होल्ड में रहता. बट वो मिला ही नहीं. दो ही हुआ है. एक 300 पिप्स लॉन्ग का. एक 100 पिप्स शॉर्ट रनिंग में. गुड मॉर्निंग श्रीनिवास जी. वर्षा हेमंत को बुला लो यार. लेट हो रहा है. सुरेश जी, एनालिसिस परफेक्ट. ग्रेट जॉब बीटीसी एज वेल एज गोल्ड दोनों में. नहीं यार, अभी 245 का एसएल लेने दो. मतलब एलजी पॉइंट कवर करने दो. उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट. स्विंग के लिए हाँ. मैं स्विंग के लिए नेक्स्ट अलोकेशन मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा फिर से 4195. 1 आवर के एलजी पॉइंट्स जो है ना, दो एलजी पॉइंट्स, अगर वो दोनों एलजी पॉइंट्स मिलेंगे तो फिर से लॉन्ग के लिए देखूंगा. ये जो बीच बीच में ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहा है सब आईडी के लिए देखना. अंबिका मेनली फॉर यू. गुड मॉर्निंग नीलेश.
वो बीटीसी का जस्ट TTS allocation थोड़ा गलत है सुरेश जी, बट रेस्ट ऑल इज परफेक्ट। वो आज के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, कोई बात नहीं। गाइस जितने भी लोग ग्रुप में हैं, डू यू गाइस वांट बीटीसी एनालिसिस एज वेल ऑन अ रेगुलर बेसिस? एक बार मैसेज कर दो यस करके, देन आई विल इन्फॉर्म द टीम टू डू। Okay, let's start with the analysis. Hemant, you are 15 minutes late, man. Come on. Right, starting from 1 hour, the major allocation of the structures, how do you look into it? What are the major perspectives of allocations and how the formation looks into the play, right? So majorly जो plan of action कल के दिन में थी वो शॉर्ट के लिए थी। क्लियर कट कल का लाइव एनालिसिस में क्लियर शेयर किया था, ये वाला एलजी पॉइंट जो है 4180 का, वो कवर होने तक होल्डिंग पे हम शॉर्ट की तरफ ही रहेंगे, उसके बाद ही लॉन्ग के लिए देखेंगे, राइट? कल के दिन वो कवर हुआ, कवर होने के बाद आज के दिन में जो मूवमेंट डेवलप हुआ है, इफ यू नोटिस what is volume indicating, high volume range was in this point of action, first allocation, market came down to minimality 200%, उस पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट रिवैम्प होके ड्रॉप करना शुरू किया। पोस्ट दैट ड्रॉप, व्हाट डू यू नोटिस? मार्केट फुल्ली इन एन आइसबर्ग जोन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ एक्शन। एक हाई वॉल्यूम डेवलप हुआ था न्यूज कैंडल के साथ, रिट्रेसमेंट फॉर्मेशन इंटैक्ट के साथ, कंप्लीटली ड्रॉप, एग्जीक्यूशन विद S2B1 सेटअप, and drop point allocation was still 4180. So what are the next major things that needs to be taken under the consideration? आज के दिन में जो मूवमेंट लॉन्ग के लिए आपको दिख रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलोकेशन इज बिकॉज ऑफ कल के दिन में जो इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से 8:30 पे जो हाई वॉल्यूम डेवलप हुआ था, उसके वजह से रिवर्सल प्लान ऑफ एक्शन वाज प्लान्ड आउट, बट डेफिनेटली 1 आवर में इंटैक्ट होके गया है, बट 15 मिनट्स में इंटैक्ट नहीं हुआ है। सो इन दैट प्रोटोजिकल वे trade of execution long की तरफ बनी, right? So wherein few members got the trade, few members didn't, but keep in mind 1, 2, 3, 3 LG points has been created. Market is in suitable iceberg zone with one high volume formation. मतलब market will come down, create the wick of the LG candles. With the LG candles, market will continue the movement, not prior to that, right? So in this formation, what are the few major things that needs to be taken under the consideration before any plan of actions you execute for today is daily time frame पे, if you notice, इंटैक्ट कंप्लीट हो चुकी है, राइट? सो इंटैक्ट कंप्लीट होने के बाद कल के दिन जो रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में आया है, विक नहीं है इस कैंडल में, लेट द मार्केट क्रिएट द विक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ होल्डिंग, राइट? suitable plan of action यही होना चाहिए at the current stage, because without wick, if the market closes bullish, within next day the market will be red again. So always remember daily time frame ka wick creation is very important, because if you notice over here, no wick, market went up, but immediately within 2 days it was a drop. Same scenario, no wick, market went up, drop, right? So LG creations ka jo jab bhi dropout aata hai, you won't be able to catch, and FOMO में आके wrong executions मत देखना,
That could be the only plan of action at the current stage of movement, right? So 1 hour is currently indicating a directional move, but sustainably there are few LG points which has been created. Let that LG points get covered. And if you're getting trade-off action plan with S2B1, S2 three-wing setup or intact, look for ID conversions, not for swing at the current moment. Am I clear in this, everyone? So follow the minimal price action points without having the greed of conversion from ID to swing. Calmly in direction पे बने रहना. Right? So this will be today's analysis. जो भी doubts है पूछ सकते हो. Good morning, Tosef. After a long time, how are you? Good morning, Usman. So conversional point of action should be always in the directions of the volume. So only one thing that needs to be taken under the consideration is whichever the moment action plan gets created, the opposite direction trades will not be taken in consideration till the time setups are formed. Market iceberg zone में है, एक ही एक volume redevelopment में दिखा है. So no FOMO executions, no direct entries without the trade-off action. What is the full form of ID conversions? Intraday converted into swing. Good morning, Faiza. जो लेट ज्वाइन हुए हैं रिवाइंड करके देख लेना गोल्ड के लिए. Sir, at 6:15 can execute for long, sir. Please explain it. 6:15. 6:15 execution was just of an intact trade of action plan. सुरेश जी, जो कि ये वाला है ना, वो वाला intact के साथ execution था in development process, right? रीजन यहाँ पे S2B1 भी क्रिएट हुआ बट हमने लॉन्ग की तरफ क्यों लिया था? M2 फॉर्मेशन टारगेट्स आर 200% and 150. With that volume, if you notice in 1 hour, what is volume indicating at the current place at that range is it is in the iceberg zone. So it will be a directional movement. Henceforth, trade-off action plan was taken towards the long. Good morning, Arya.
There is an intact pending zone near current swing low in 1 hour, but in 15 minutes it seems to be covered. So what to expect here? Will it cover 1 hour intact zone? So currently 1 hour intact zone is not the plan of action what I'll be looking for. In 1 hour I'll be looking for LG coverage. Okay. Sir, what was the reason of taking yesterday's second shot? Because second candle of S to B1 is green. There was no reason. लाइव में कौन सा ट्रेड में थे हम यहाँ पे? शॉर्ट में थे. We got another execution. We added the quantity. And this is a intact conversion that is in the book. If you follow three wing, you will come to know the reason of executing this trade. LG1, LG2, and a major intact pending. With that followment of daily candle, which was at 4160. मेजर एलजी मेरा फोकस रहेगा ये वाला, राइट? क्योंकि ये वाला इंटैक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, नो डाउट. बट इफ यू नोटिस, this LG is more relevanter than this point. So this wick creation is very much important. सर कन्वर्जन एंट्री नहीं लिया भाई, सो रहा था मैं उस टाइम पे. 4164 बाई किया था. क्या सर? 4164 बाइंग के लिए ट्रेड था ही नहीं. हमको सेटअप चाहिए शेयर्स, डायरेक्ट एंट्री नहीं, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मेरा थ्री विंग सेटअप एग्जीक्यूट होता अगर ये वाला रेड कैंडल आके इंटैक्ट होता है. यहाँ पे इंटैक्ट हुआ ही नहीं. So this was 1 hour intact and continuity. So my execution towards long was only one with the setup is this one. Exact number बोलना चाहो तो 4207.8. That was the execution point. And बिना setup का executions नहीं होता. So we let go trades. We don't have to feel pressurized in executing. So only one thing, simple rule. सेटअप बनेगा ट्रेड एग्जीक्यूट करो, सेटअप नहीं बनेगा छोड़ दो. नो फोमो, वेट पेशेंसफुली till the setup is created. Only mantra that you need in this business. Because our capturing is not just 30-40 pips. So patience execution is very much important.
एंड आर यू क्लियर कट यार? हमेशा समझा है सरप्लस जब भी फॉर्म होता है टारगेट इज ऑफ 100%, राइट? बिटकॉइन लॉन्ग में है ना 92,000। सिंपल फॉर्मेशनल एग्जीक्यूशन में बने रहना। एग्जीक्यूशन पॉइंट वाज विद द त्रिशूल, थ्री विंग सेटअप फॉर्मेशन। थ्री विंग सेटअप फॉर्मेशन होने के बाद त्रिशूल फॉर्म हुई थी, त्रिशूल फॉर्म होने के साथ कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट। हाउ डू यू रिवैम्प द स्ट्रक्चर? The revamp point of action will be taken from the three wing allocation 1 followed through demand. There is no conversion point yet. Break and continue. 150% rejection, change of character. When there is a change of character, rules are simple. The plan will be allotted in pursuance of supply converted into demand. So this is the supply which got converted in the point of action of demand. Break and continue, 200% direct break, 150% rejection, surplus allocation from the top till the bottom. Redirection allocation is to be one execution. Break and continuity, surplus minimality M1. First target is 100%, 100% break and continue mila tha. So 200% target, right? So with the continuity of the movement, what are the next plans that needs to be taken under the consideration at this current stage? Step-to-step process, demand, revamp the demand, break and continue, 150% rejection, new demand allocation 1, point of interest, break and continue, 150% rejection. So surplus 200% continued, break and continue. So first come first serve allocation will be played in this point. Minimality M1 formation, 100% rejection, break and continue with target. First target allocation of new M1 will be 150, then 2. Okay. Indian markets. $15 minutes. Civil punk अगर है तो new plan of action, break and continue. First point of action will be played. M1 formation, with M1 formation drawback analysis, 150%, 200. Retracement point of actions will be taken under the consideration to the previous action plan. Start point of range 1, start point of range 2, break and continue, 200% rejection. With 200% rejection, revamp structure 1, 2. First target will be minimality 200%. If it breaks and continue, the next range of action plan will be continued. Okay. Sir, I have sent analysis. Kindly check and let me know, sir. Varsha, Shrikant ka share karo.
BTC का जो स्विंग कन्वर्जन लॉन्ग है, MTSL स्ट्रॉन्ग रखो सभी लोग. Strong in the sense take home should be 3000 points plus. Stream will be there for next 10 minutes. जो भी डाउट्स है पूछ लीजिए. नहीं नहीं अंबिका, सिर्फ ट्रेल करके चलो अपना. नहीं नहीं, आप करो, प्रॉब्लम नहीं. सही डायरेक्शन में. So do we also have to do conversion when it's minor coach or during a major coach only? हाँ, बेरिश मूवमेंट में जो रिट्रेसमेंट पॉइंट रहता है उसके हिसाब से ही एलोकेशन देंगे कन्वर्जन के लिए. सर S2P1 सेटअप ओनली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ही देखते हो. स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 आवर्स एंड 1 आवर, आईडी के लिए 15 मिनट्स. Good morning, everyone. Going well on. Hope I spelled it right.
Sir, if you want to learn, definitely by execution you can identify it. I will not let you know where the reversal will come from. The reversal is coming from exactly where we want. LG point and daily intact completion. श्रेयस हमारा सेटअप के हिसाब से हम ऑलरेडी ट्रेड में हैं. Shrikant, purple lining is of 4 hours, no? So getting confused in yesterday's 5:15 to 7 p.m. ये वाला क्यों ले रहे हो? कन्वर्जन पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है. कन्वर्जन कैंडल ग्रीन, ए कैंडल अलोकेशन allotted 100% रिजेक्शन, 100% रिजेक्शन के साथ continue it. This was a minimality formation. 1 hour. 1 hour is blue color, not purple. 4 hours is purple. No? Follow it in the book. The difference between minimality M1 and M2. सर $50 कैपिटल को कैसे ग्रो करें? माइक्रो से मिनी में आ जाओ. 0.01 सेटअप के साथ एग्जीक्यूशन. Right? SL will be of $3 in Asian session, $4 to $5 in London and New York. As per the pip range, execution will be followed through with S2B1 setups. Holding will be for 20-30 pips. Right? So follow this rule for 12 trades. You'll be having a capital of $500. With that, come to a deployment stage of 0.05. Risk to reward range will be same again of 20 to 30 pips in Asian, 40 to 60 pips in London, New York, because directional movements are followed with holding of 200 to 300 pips for coming 10 trades. SL जाएगा तो it will be in the range of risk appetite. So post 10 trades of 200 pip conversions, wait calmly, take a break of 2 days because you'll be having a capital of $1,500. Then execution will be taken in the play of 0.2 lots, followed with the same rule of Asian session 20 to 30 pips and London New York session of 40 to 60 pips. Alright? अगर 0.2 में first trade red हो रहा है, second trade red हो रहा है, right? Convert it into 0.1 lot, followed with the same setup plan of executions, 10 trades. 200 pips, followed through the direction allocations. This trade में से 8 execution भी सही direction में पकड़ोगे, then the capital growth will be of $6,000 followed through the plan of action. Only thing, analysis and execution should be always in perspective of setups
not in perspective of FOMO, execution, fear, greed. So yesterday 4230 पे जो सेल का आप S2P1 सेटअप बना था वो 15 मिनट्स पे था या 1 आवर पे? Surplus minimality M1 100% was of 15 minutes, 1 hour intact level rejection. Okay, sir, I'll change it to blue for the 1 hour. My allocation is right. Yes. But आपने future predict कर लिया without the retracement, Shrikant. Setup के साथ, right? Acknowledgement clearly दिख रहा है ना, direction किस तरफ है. Emotions को कैसे control करें? $50 आपने पार्टी में खर्च कर दिया करके सोच लो, right? या खाने पे खर्च कर दिया या कुछ खरीद लिया. So the emotions on that $50 is gone. Then the execution will be taken play without emotions because you have already spent that money. नहीं पूरा आना चाहिए ड्रॉप. ये allocation जो है next 7 minutes it should sustain in the same range, then intact and continuity. That's when the plan of action will be taken under the consideration, not prior to that. Add on के लिए. Beautiful guys, BTC. Continuity on the break above of 93,308, next target will be 94,300. Keeping in mind, we do have one LG point over here, slow and steady movement. If the range of motion doesn't give a break for next 1 hour, sorry, my bad, 15 minute mein dekh raha hu, right? So the range of motion doesn't create a wick in the 1 hour in this formation, then definitely the continuity will be till the 150% minimum. Crypto executions follow the analysis of 1 hour. Execution entries will be looked in perspective of 15 minutes. Six minutes में candle closure हो रहा है. 1 hour का.
कन्वर्जन देने दो मार्केट को. S2B1 क्या है? एंट्री है. सर आपने कहाँ से सीखा ये सब? खुद से सीखा? कहीं से सीखा होता तो ऑलरेडी यूट्यूब में फेमस होता ना. 1 hour candle closing in 59 seconds, guys.
बात तो सही है। Stream will be there for next 5 minutes. जो भी doubts है, please do ask. नहीं स्मिता मैम, वही सो हरी, थम जाओ थोड़ा। रिजर्वेंस में तो हंट होने दो, लिक्विडिटी डाइल्यूट तो होने दो, उसके बाद डाइल्यूशन आने दो वहां पे। ऐसे थोड़ी होता है, आए 8 मिनट में स्क्रीनिंग किया, 10वें मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ बीच बीच में इंग्लिश बोलना पड़ेगा क्योंकि हर एक जगह से लोग हैं, तो डेफिनेटली हिंदी में भी समझा देंगे, इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है। और वर्षा, आद्या को बोल दो कि बीटीसी का भी एनालिसिस ग्रुप में शेयर कर दो। न्यूयॉर्क सेशन से स्टार्ट करने बोलो। व्हाट्सएप नंबर किस चीज के लिए है? नहीं, उधर गैप एम्प्टी था वांगमा, सो कुछ डालना था तो नंबर डाल दिया। अगर कोई और लैंग्वेज में भी पूछना हो तो पूछ लो, सर को बहुत सारी है। थैंक यू उस्मान। What is an ideal RR you suggest? What's your name, Mr. JNVJZP? Asian session 20 to 30 pips, London New York session 40 to 60 pips. If the conversion is looked in perspective of holding more than 250 pips, then only follow that RR. अगर आप 40 पिप्स की न्यूयॉर्क सेशन में एसएल दे के 10-20 पिप मीन्स का ट्रेड होल्ड कर रहे हो, इट्स नॉट वर्थ वेट। ओके।
क्योंकि मेरा सिर्फ एसएल लगता है। फोमो एग्जीक्यूशन होगा तो एसएल ही लगेगा ना जनाब। सेटअप्स के साथ ट्रेड कर लो। सुरेश जी, आपने ये क्या किया इस जोन में? सर आप कहाँ से हो? मुंबई। बहुत जबरदस्त किया। मुझे लगा आपकी बुक पर कोई डिस्काउंट आएगा, बट आया ही नहीं। दिवाली पर भी नहीं आया। बट अबाउट previously it was 18K, but now it's 30. To be precise, for 35,500. डिस्काउंट अमेजोन पे नहीं मिलेगा। You have to get it done through the team. They will vouch for a PDF file. एंड दिवाली पे जो डिस्काउंट था, वो डिस्काउंट में बहुत सारे लोग खरीदे, एंड इट wasn't on pursuance of Amazon. Amazon buying is for Indians currently at 250 plus $150. So it's $370 Amazon buying for Indians. सर आपकी कोई पेड ग्रुप है क्या? नो, वी डोंट हैव एनी पेड ग्रुप। गाइस, बी इन द सेम डायरेक्शन, फॉलोड थ्रू, शांति से वेट कर लो एग्जीक्यूशंस पे। एंड जितने भी लोग फॉलोड एग्जीक्यूशन पे है, एंड सुरेश जी हैव डन ए ग्रेट जॉब इन दैट जोन, फॉलो में रहना। एंड all the beginners, just make sure whatever strategy, whatever concept, whatever formulations you are following, 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis, followed through, get a small capital, compound it, develop it by following a proper risk to reward, remove fear, greed, and FOMO. How can you do that? By reading books, yoga, and meditation. And it's your hard-earned money, so make sure to protect it. How can you protect it? By not giving your account to handle by someone or by following the tips.
Just make sure one thing: hard earned money can be grown first when you learn, then you earn. With that, it should be your analysis, your execution, your psychology, your preference of lookouts in the market, not any others. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली सेशन में. तब तक के लिए take care. Bye bye.